हेलो एवरीवन, ये हमारा थर्ड लेक्चर है डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर का. इफ यू वांट टू एक्सेस ऑन माय फ्री क्लासेस एंड पीडीएफ नोट्स यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज योर. You have to comment on continuity as well as the differentiability for a function, and the function is given as f of x is one is x squared into signum of box of x plus fractional part of x. अब when x is in between 0 and another definition is sin x plus modulus of x minus 3 when x is in between 2 and 4. किस पॉइंट पे चाहिए? at points x equals to 1 and another point x equals to 2. तो ये दोनों पॉइंट पे आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है वो स्मूथ है या नहीं और कंटिन्यूस है या नहीं. ठीक, वो दोनों चीज़ आपको बताना है. डिफरेंशियबिलिटी एज वेल एज कंटिन्यूटी. सो सबसे पहले विच वन डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना होगा. एट x इक्वल्स टू 1 पे हम चेक करते हैं सबसे पहले. तो स्टार्टिंग विद डिफरेंशियबिलिटी फर्स्ट. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1 क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0. ऑन द टॉप यू हैव f of x minus h means 1 minus h minus f of x means f of 1 एंड नीचे आपके पास माइनस h. ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0. देखो दिस इज माइनस h. ठीक, सबसे पहले ऊपर का हिस्सा लिख लेते हैं. On the top you have f of 1 minus h. h is infinitesimally small positive number. 1 minus h will be slightly less than 1. तो इनपुट जो है वो 1 से जस्ट छोटा है. इनपुट इज स्लाइटली लेस देन 1. तो ये वाला डेफिनेशन होगा. यहाँ पे इनपुट जो है वो 1 से छोटा है. ठीक है, मीन्स इनपुट इज लाइंग इन बिटवीन 0 एंड 2. दैट मीन्स इसमें आ रहा है. तो ये वाला डेफिनेशन को देखो, दिस डेफिनेशन. जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस h. 1 minus h whole square signum of box of 1 minus h plus fractional part of 1 minus h. ठीक है, hope this is clear. So this is the function value at 1 minus h minus this minus f of 1. f of 1 चाहिए तो सेम डेफिनेशन f of 1 क्योंकि x का वैल्यू 1 यहाँ पे है. तो f of 1 के लिए यू डायरेक्टली पुट x इज इक्वल्स टू 1 हियर. 1 स्क्वायर सिग्नम ऑफ बॉक्स ऑफ 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1. ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय माइनस h. वेरी सिंपल. इसको थोड़ा एनालिसिस करो. देखो दिस इज व्हाट 1 minus h. 1 minus h is slightly less than 1 और उस चीज़ का बॉक्स कितना होगा? 0 हो जाएगा. तो सिग्नम ऑफ 0 विल बी 0. दैट मीन्स दिस एंटायर टर्म बिकम्स 0. ठीक है, ओके. अब इसमें देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस h आपको पता होना चाहिए. इसका वैल्यू होता है 1 माइनस h.
कैसे होता है फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। देखो एक रूल, देखो आप वो ऐसे भी सोच सकते हो, एक्स इज रिटन एज बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, करेक्ट? ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिखोगे? एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स लिखोगे। अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन माइनस एच चाहिए तो वन माइनस एच मतलब वो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वन माइनस एच लिख रहा हूँ, वन माइनस एच माइनस बॉक्स ऑफ वन माइनस एच, सिंपल। वन माइनस एच का बॉक्स कितना होगा? ए नंबर विच इज स्लाइटली लेस देन जीरो, उसका बॉक्स होगा जीरो। तो बस वन माइनस एच ही बचा ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन माइनस एच इज वन माइनस एच, ठीक है। ठीक, तो ये वन माइनस एच हो गया। एंड सिग्नम ऑफ, देखो ये बॉक्स ऑफ वन का वैल्यू होता है वन, तो सिग्नम ऑफ वन विल बी वन, क्योंकि इफ द इनपुट इज पॉजिटिव दैट मीन्स सिग्नम का वैल्यू वन आएगा। तो ये जो पूरा टर्म है इसका वैल्यू आ गया वन, और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन का मतलब है जीरो। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ऑन द टॉप यू हैव, ऊपर देखो ये जीरो हो गया, जीरो प्लस वन माइनस एच माइनस वन हो गया, ठीक है। एंड नीचे यू हैव माइनस एच, वन वन कैंसिल हो गया, माइनस एच कैंसिल हो गया, तो बचेगा वन। देन यू पुट एच इज इक्वल्स टू जीरो ईयर, बट एच है ही नहीं, मतलब समझ में आ रहा है क्या होगा? यहाँ पे वन बचेगा। नाउ यू पुट एच इज इक्वल्स टू जीरो ईयर बट देयर इज नो एच, तो सिंपल इसका वैल्यू आएगा वन। और है समझ में? तो दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट एच टेंस टू जीरो, f of 1 plus h minus f of 1 divided by h. This is the formula. Limit h tends to 0. See, the input is more than 1, है ना? Input is more than 1. तो which definition? सेम वही डेफिनेशन आएगा, इसमें भी 1 से ज़्यादा है, स्लाइटली मतलब मोर देन 1, तो सेम डेफिनेशन इट विल हैपन। एक्स स्क्वायर मतलब इनपुट स्क्वायर, इनपुट क्या है? 1 प्लस एच होल स्क्वायर, एंड सिग्नम ऑफ बॉक्स ऑफ 1 प्लस एच प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इनपुट 1 प्लस एच, ठीक है। ये हमने लिख लिया, ये वाला चीज़ एफ ऑफ 1 प्लस एच का वैल्यू। नाउ माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 तो अभी जस्ट हमने निकाला था, एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आया? ये पूरा एफ ऑफ 1, इस एफ ऑफ 1 वैल्यू इज 1, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, एफ ऑफ 1 का वैल्यू सिंपल 1 आ रहा है, डिवाइडेड बाई एच, एंड लिमिट एच टेंस टू 0। ऑन द टॉप यू हैव, देखो 1 प्लस एच का बॉक्स आएगा 1, तो सिग्नम ऑफ 1 विल बी 1, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एच होल स्क्वायर, 1 प्लस एच होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस एच विल बी, 1 इज एन इंटीजर, तो 1 प्लस एच का फ्रैक्शनल पार्ट होता है एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 इसको ओपन करोगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2h मतलब 3h बचेगा, 3h प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच आएगा, समझ में आ रहा है? एंड दिस वैल्यू एच एच कैंसिल करो तो 3 प्लस एच बचेगा। नाउ यू कैन इजिली पुट एच इज इक्वल्स टू 0 ईयर, तो 3 आ गया, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर डिफरेंट, तो बट बोथ आर फाइनाइट। क्या लिखोगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not same as right hand derivative, but both are finite. तो क्या होगा? Not differentiable but continuous. Not differentiable but continuous at x equals to 1, ठीक है। at x equals to 1 आ गया, ये हमने कर लिया, x equals to 1 पे हो गया। Now you have to check x equals to 2,
at x equals to 2, you have to check again. Left hand derivative, limit h tends to 0, f of 2 minus h minus f of 2 divided by minus h. Yoga, this is the formula. Now कौन सा डेफिनेशन ओपन होगा देखो, 2 minus h means input is less than 2, slightly less than 2. कौन सा डेफिनेशन आएगा, 2 से छोटा है, तो फर्स्ट डेफिनेशन आएगा एक्स स्क्वायर सिग्नम ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू सिग्नम ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यही होगा, ठीक है. माइनस एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू का वैल्यू क्या है बोलो, एफ ऑफ टू के लिए इनपुट इज 2, तो ये वाला डेफिनेशन आएगा एफ ऑफ टू. देखो क्या आ रहा है एफ ऑफ टू का वैल्यू, साइन 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस 3, मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस 3 विल बी +1, तो साइन 2 +1 आएगा, है ना, साइन 2 +1, साइन 2 +1. दिस इज एफ ऑफ टू वैल्यू एंड नीचे आपके पास है माइनस एच, ठीक है. इसको करो सिग्नम ऑफ 2 माइनस एच, देखो 2 माइनस एच का बॉक्स कितना होगा, 1 होगा, तो वैल्यू होगा 1, तो सिग्नम ऑफ 1 विल बी 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 माइनस एच एज इट इज, ये सिग्नम ऑफ 1 होगा तो 1 हो जाएगा बेसिकली, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 माइनस एच का वैल्यू होता है 1 माइनस एच. कैसे बता देता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैन बी रिटन एज x माइनस बॉक्स ऑफ x, है ना, x माइनस बॉक्स ऑफ x आप लिख सकते हो. तो इफ यू वांट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 माइनस एच, जहाँ पे x है वहाँ पे 2 माइनस एच लिख दो. 2 माइनस एच, 2 माइनस एच का बॉक्स कितना होगा, वैल्यू विच इज लेस देन 2, उसका बॉक्स होगा 1, यहाँ से 1 1 कैंसिल, 2 क्या होगा 1 माइनस एच होगा, ठीक है, 1 माइनस एच आ गया. ओके, ये 1 माइनस एच आ गया, माइनस साइन 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस एच. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर डायरेक्टली पुट करके देखो, जीरो क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, देखो नीचे आपके पास 0 आ रहा है माइनस 0 के साथ, ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आपके पास देखो, ऊपर एक आपके पास नॉन जीरो आएगा, देखो क्या है, दिस इज 0, दिस इज 4 प्लस 1 माइनस 0 1 माइनस साइन 2 माइनस 1, 1 1 कैंसिल हो गया, 4 माइनस साइन 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो सम पॉजिटिव डिवाइडेड बाय माइनस 0 मीन्स माइनस ऑफ पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 0 क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा. This value will be minus infinity. So this is left hand derivative. So you don't need to check for right hand derivative because already it is not differentiable. ठीक है, आप कर भी सकते हो, बोर्ड एग्जाम में करके दिखा देना. Okay, I am leaving that part for you. राइट हैंड डेरिवेटिव अब निकालो, इसका वैल्यू ठीक है, इसका कुछ वैल्यू आएगा, आई होप इट इज 2 cos 2 minus 1, ठीक है, आप देख लेना इसका वैल्यू. एंड सिंस एक आपका इसमें इन्फिनिटी आ गया, दैट मीन्स दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not same as right hand derivative and both are not finite also, ठीक है.
तो क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल. नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2. 2 पे चेक किया था. कैन यू कमेंट ऑन कंटिन्यूटी हियर? नो, यू कैनॉट कमेंट बिकॉज एक में इन्फिनिटी आ रहा है. तो कंटिन्यूटी के लिए यू हैव टू चेक. नाउ चेक फॉर कंटिन्यूटी. एट x इक्वल्स टू 2. कैसे करते हैं कंटिन्यूटी चेक? लेस देन लिमिट, लेस देन लिमिट. तो लिमिट h टेंड्स टू 0, you have to just find this value 2 minus h. Limit h tends to 0, the function value is ये वाला होगा ना फंक्शन वैल्यू f of 2 minus h. ये जस्ट हमने निकाला था अभी 2 minus h, ये वाला. तो यहाँ से क्या आ रहा था, ये वाला पोर्शन आ रहा था 2 minus h. तो 2 minus h होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 minus h. ठीक है. सो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 5. यू कैन इजिली पुट h इज इक्वल्स टू 0 हियर, तो आपको 5 मिलेगा. ठीक है. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है? लिमिट h टेंड्स टू 0, इनपुट इज 2 प्लस h. इसमें क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0. What is the function value if the input is slightly more than 2? Input is slightly more than 2. तो ये वाला डेफिनेशन खुलेगा. sin x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3. sin x, x मतलब 2 प्लस h प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3. x is 2 प्लस h माइनस 3. ठीक है. देखो यहाँ पे भी आप इजिली पुट कर सकते हो 0 बिकॉज दिस साइन एक्स इज कंटिन्यूअस, मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस. यू कैन डायरेक्टली पुट h इज इक्वल्स टू 0 हियर. तो क्या देखें, साइन 2 प्लस 0 पुट करो तो 1 आ रहा है. फंक्शन वैल्यू इटसेल्फ एट x इज इक्वल्स टू 2. फंक्शन वैल्यू के लिए विच डेफिनेशन इट विल ओपन? Same second definition, sin x plus modulus of x minus 3. sin x plus modulus of x minus 3. तो इसमें भी क्या आ रहा है, sin 2 plus 2. ठीक. As you can see, left hand limit, right hand limit, and the function value are different. So left hand limit is not same as right hand limit, not same as function value. So discontinuous. At x equals to 2. ठीक है. तो ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन करना होगा. We have one more question. Question number 2. इसमें भी आपको सेम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बताना है. The function is given as square root of x 1 plus x sin 1 by x when x is greater than 0. Zero when x is equals to 0, and square root of minus x 1 plus x sin 1 by x.
So these are three different definitions for this function. Okay. You have to check the differentiability as well as continuity at x equals to 0 point. Left hand derivative limit h tends to 0. देखो आपको बस ये लिमिट फाइंड करना आना चाहिए बस. Now everything will be very easy. The formula says नीचे आपका minus h and this is x minus h means 0 minus h minus f of 0. ठीक है. So you have to find this value. Limit h tends to 0. See, f of minus h, the input is negative है ना, h is positive, input is negative. तो इनपुट अगर नेगेटिव होगा सो दिस डेफिनेशन विल ऑपरेट. ये वाला डेफिनेशन इसमें क्या कहता है कि ये है आपका वो डेफिनेशन. दैट मीन्स जहाँ पे x है वहाँ पे आपको माइनस h रखना है. स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ x के जगह पे हम रखेंगे माइनस h. ठीक है. इंटू 1 प्लस माइनस h into sine 1 by minus h. So this is the function value at 0 minus h. Okay. Now you need minus of f of 0. F of 0 is what? When the input is 0, the output is also 0. F of 0 is 0 itself. नीचे आपके पास है minus h. बस अब this entire question is converted into this limit. अब बस आपको ये लिमिट फाइंड करना है. वेरी सिंपल. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ h एंड यहाँ पे देखो साइन इज एन ऑड फंक्शन तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. तो 1 प्लस h इंटू साइन 1 बाई h. समझ में आ रहा है. एंड नीचे आपके पास है माइनस h. ओके. ठीक है. अब देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ h और ये h कैंसिल होके नीचे स्क्वायर रूट वो बचेगा, क्योंकि h को हम कैसे लिख सकते हैं, इस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h एंड माइनस ऐसा हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ h. तो ये एक कैंसिल हो जाएगा. तो लिमिट h टेंड्स टू 0. ऑन द टॉप यू हैव 1 प्लस h साइन 1 बाई h डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस कर सकते हैं. ठीक है. नाउ इज देयर एनी इनडिटर्मिनेंसी? कैन यू सी? नीचे आपके पास 0 आ रहा है, ऊपर देखो ये साइन ऑफ इन्फिनिटी आ रहा है. मीन्स ये कुछ मतलब वो वैल्यू होगा इन बिटवीन -1 to 1 एंड उसके साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है. तो ऊपर आपका 1 आ रहा है, नीचे आपका 0 आ रहा है. सो दिस इज नॉट एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म. तो इसमें आपका डायरेक्टली यू कैन पुट h इज इक्वल्स टू 0 हियर. ऑन द टॉप यू विल बी हैविंग 1 प्लस 0 एंड नीचे आपके पास है -0. सो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी माइनस. Simple. You just have to find the limit. So this is left hand derivative. So देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास इन्फिनिटी आ रहा है. दैट मीन्स यस दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल. अब इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव भी चेक कर सकते हो. ठीक है. दैट पार्ट आई एम लिविंग टू यू. करके देखो क्या है. राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो एंड बिकॉज वन ऑफ देम इज इन्फिनिटी सो नॉट डिफरेंशिएबल. नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 है ना, क्योंकि हमने 0 पे चेक किया. सो कैन यू कमेंट ऑन कंटिन्यूटी? नो यू कैंट. सो फॉर दैट यू अगेन check for continuity. Check for continuity at x equals to 0. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो at x equals to 0 पे. h tends to 0. You just have to find the function value 0 minus h. ठीक है. तो ये जस्ट अभी हमने वो निकाला था f of 0 minus h. f of 0 minus h is this value. ठीक है. That means ये वाला वैल्यू क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ h
into 1 plus h sin 1 by h. Okay, there is no indeterminacy here. You can directly put h is equals to 0 and you can see 0 आ रहा है. ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0, राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट h tends to 0, you have to find 0 plus h. Means for this function the input is positive. अगर input positive है तो कौन सा डेफिनेशन खुलेगा? फर्स्ट डेफिनेशन. जहाँ पे भी x है there you have to write h, square root of h into 1 plus 1 plus h sin 1 by h. ठीक है, the first definition I have put x is equals to h. yeah, once again same, इसका वैल्यू 0 आ रहा है. So left hand limit, right hand limit are same, but again you have to check the function value also at x equals to 0. x equals to 0 के लिए कौन सा definition? Yes, second definition is given. 0 आ रहा है, f of 0 is 0. So as you can see, left hand derivative, right hand left hand limit, right hand limit, and the function value all are same and finite. So yes, continuous at x equals to 0. Okay, continuous हो गया, बस differentiable, not differentiable. Okay. Simple question. Now we will see some very important points. Results बोल दो उसको. जो चीज़ हमने कंटिन्यूटी के लिए वो दिखा था, वही सेम चीज़. If f of x and g of x are differentiable are two differentiable functions, then in their common domain क्या हो वो पता है. f of x प्लस करो या माइनस करो, ये भी आपका क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा. मल्टीप्लाई करो, ये भी आपका डिफरेंशिएबल होगा. डिवाइड करो, दिस इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल. ठीक है, दिस ऑल थ्री कॉम्बिनेशंस आर डिफरेंशिएबल. ठीक है, सेम चीज़ हमने सीखा था कंटिन्यूटी में भी. तो दिस इज फर्स्ट नोट. सेकंड, then if one of them is differentiable, if f of x is differentiable but g of x is not differentiable, तो उसमें जो था इसमें भी सेम, g of x is not differentiable, then f of x प्लस करो या माइनस करो, this is for sure not differentiable. So in all other possible combinations you have to check. In all other possible combinations you have to check. So it may be differentiable or may not be differentiable. Okay, so these three are very important points. हम यूज करेंगे बाद में. Now same process we will follow. जैसे continuity में हमने क्या देखा था? We have seen that you have to check the continuity nature of a function at a given point. ठीक है, और वो पॉइंट मतलब वो क्वेश्चन में मतलब वो दे देता है कि इसमें मतलब वो कंटिन्यूटी चेक करो.
Now we want to check the differentiability nature in an interval. इंटरवल में क्या होगा वो आपको देखना है. ठीक है, वो हम एक काम करते हैं, वो टॉपिक हम हटा देते हैं. जैसे if a function is said to be what differentiable, then within the domain at each and every point it has to be differentiable. ठीक है, हर एक पॉइंट पे वो फंक्शन मतलब वो स्मूथ होना चाहिए. ओनली देन वी विल से दैट द एंटायर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल विद इन दिस डोमेन. तो आपको अगर एक क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है कि इस पॉइंट में मतलब वो फाइंड करो, तो आप क्या करोगे? यू हैव टू चेक इट्स एंड एवरी पॉइंट, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेक. हर एक पॉइंट पे चेक करना इज़ इम्पॉसिबल. तो यू शुड सर्च फॉर डाउट पॉइंट्स. याद है डाउट पॉइंट्स? डाउट पॉइंट्स वो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट नोट, डिफरेंशिएबिलिटी एन पॉइंट्स पे डिस्कस नहीं किया जाता है. ठीक है, तो उसमें जो था वही पॉइंट्स आएगा, बट एन पॉइंट्स ऑफ द डोमेन को नेग्लेक्ट करना होगा. ठीक है, तो देखो उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या था डाउट पॉइंट में, कंटिन्यू चैप्टर में एन पॉइंट्स ऑफ द डोमेन था, लेकिन डिसकंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट डिस्कस्ड एट एन पॉइंट्स. ठीक है, so the first doubt point will be points about which function changes its definition. ये हो गया first point. Second, if there is box function for box of f of x, check where box of where this function is an integer. Third, for fractional part of f of x, check where f of x is an integer. ठीक है, एंड अगर सिग्नम फंक्शन रहा तो फॉर सिग्नम ऑफ एफ ऑफ एक्स. ठीक है, सेम वही चीज़ हम लिख रहे हैं इसमें भी. डाउट पॉइंट्स, चेक वेयर एफ ऑफ एक्स इज जीरो, है ना, बिकॉज सिग्नम फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो. तो वेयर एफ ऑफ एक्स इज जीरो. ठीक है, इसमें एक और पॉइंट इंक्लूड होता है, तो बता सकते हैं कौन सा पॉइंट? फॉर मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स. देखो दिस मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, चेक वेयर एफ ऑफ एक्स इज जीरो. ठीक है, तो यही चीज़ आपको चेक करना होगा. तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, नोट करने वाला पॉइंट ये है, differentiability cannot be discussed at end points. है ना, अब कैसे मतलब वो करोगे, चेक करोगे डिफरेंशिएबिलिटी एंड पॉइंट? सपोज यू हैव ए राइट एंड बाउंड्री पॉइंट. एक राइट एंड बाउंड्री पॉइंट है, तो इसमें आप कैसे चेक करोगे? यू जस्ट, तो यू कैनॉट फाइंड द राइट हैंड डेरिवेटिव ना, राइट हैंड डेरिवेटिव आप इसमें फाइंड नहीं कर पाओगे. तो यू कैनॉट डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी एट एन पॉइंट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, तो ऐसे आपको डाउट पॉइंट्स निकाल के हर एक पॉइंट पे यू कैन चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द गिवन फंक्शन.
now we will see another approach, graphical approach. In some questions, you just draw the graph and you can comment on its differentiability just by looking at the graph. कैसे? तो ये तो आपका वो पता ही है. For a function to be differentiable, for a function to be differentiable, the graph of the function must be smooth in its domain, है ना? ये आपको पता ही है. तो ग्राफ आपका स्मूथ होना चाहिए. ठीक है. The points where function is not differentiable, function is not differentiable are, देखो सबसे पहले आपके पास कुछ पॉइंट्स आएंगे जिसको हम बोलेंगे कॉर्नर्स. कॉर्नर्स पॉइंट क्या है? जैसे इसमें देखो, सपोज यू आर हैविंग ए ग्राफ लाइक दिस, फिर अचानक से इसका वो चेंज हो गया डायरेक्शन, ऐसे आ रहा था फिर ऐसे चला गया. सो दिस पॉइंट इज ट्रीटेड एज कॉर्नर. एज यू कैन सी, इस पॉइंट पे दिस ग्राफ इज नॉट स्मूथ, दैट मीन्स दिस at this point this graph is not differentiable. Same, suppose you have modulus functions like this. This is also treated as a corner. Here these are examples. This is a corner, ये corner है, corner है. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे corner. और एक नया वर्ड which is called cusp. cusp देखो कैसा होता है, हम देखेंगे आगे एग्जांपल्स के साथ. सपोज यू हैव ए ग्राफ लाइक दिस, फिर ये ऐसे चला गया. सो दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस कॉर्नर्स. तो इसमें जैसे ये शार्प पॉइंट ऐसा होता है, कास्ट लाइक दिस. ये ऐसा हो गया. तो कास्ट पॉइंट पे भी आपका क्या होता है? नॉट डिफरेंशिएबल, है ना? नॉट डिफरेंशिएबल होगा पॉइंट्स. ठीक है. So these are two types of points at which this function is not differentiable. तो आपको बस ये ग्राफ बनाना है एंड जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ, इफ देयर आर कॉर्नर्स, इफ देयर आर कास्प्स, तो आप क्या बोलोगे कि दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट गिवन पॉइंट. ग्राफ से आप बता सकते हो. एंड वन मोर पॉइंट जिसमें फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इज if the function is discontinuous at the points where function is discontinuous. Not differentiable होगा. जैसे आपको पता है ग्राफ ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स like this. At integers you have discontinuity, so that means not differentiability. Okay. Now we will see some questions based on graphical approach. This is y equals to modulus of sin x. Questions from transformation of graphs. Modulus of sin x सबको पता है कैसे ड्रॉ करना होता है. देखो, this is x axis
y-axis. तो first you have to draw the graph of sin x. sin x का ग्राफ बनाओ, क्या बनेगा? Like that it keeps on going. Okay. So this is the graph of sin x, and if you have to draw its modulus of sin x, तो आपको बेसिकली क्या करना होगा? You just have to erase the bottom part और उसका इमेज ले लेना होगा. तो सबसे पहले इमेज ले लो, इमेज ले लिया ये बॉटम पार्ट का, ठीक है, एंड इरेज कर दो नीचे वाला पोर्शन मे बी. This is the graph of modulus of sin x. Can you see some cusp here? These values are cusp. So that means, can you tell me what are the points of non-differentiability? So this point is 0, this is pi, this is 2 pi, this is 3 pi, this is minus pi, this is minus 2 pi. So we can say that it is not differentiable. This given function is not differentiable at x is equals to n pi, here where n is an integer. Okay, so this is how you can comment on nature of smoothness just by looking at the graph. Okay, differentiability ये हो गया. Second question, y equals to sin square x. Y equals to sin square x. Can you draw its graph? Sin square x. तो इसका ग्राफ कैसा होता है बताता हूँ. दिस इज वेरी सिंपल, वैसे भी बना सकते हो. हाफ 2 sin square x. I apply the formula. हाफ ऑफ कौन सा फॉर्मूला था? 1 माइनस cos twice x. ठीक है. तो यस दिस इज व्हाट डिफरेंशिएबल, क्योंकि हम साइन स्क्वायर का मतलब को डेरिवेटिव तो मतलब को निकालते ही है, और वैसे भी इसका ग्राफ स्मूथ है. कॉस फंक्शन है, कॉस फंक्शन इज व्हाट डिफरेंशिएबल. 1 माइनस कॉस फंक्शन, ये जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है. उसका ग्राफ में दिखा देता हूँ. ग्राफ बनेगा कंप्लीटली ऑन द टॉप. Graphs looks like this. So if you zoom this particular portion, then you will see it is very smooth. ये आपका smooth है, ठीक है. This is not cast, ये smooth है, ऐसे smoothness. It means this is differential. Now I am giving some questions for you. Question number 3. Check the points of non-differentiability for this given function. Modulus of 3 minus modulus of x minus 2. Yes, you can easily draw the graph of this thing. हमने वो सीखा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ लेक्चर में. Just try to draw the graph first and then check the corner points. उस corner points पे ये non differentiable होगा. Another question. The function is modulus of e to the power minus x minus 5 minus 1 or modulus. Okay, this is the fourth question. Question number 5. Y equals to this is the graph. Y equals to modulus of sine modulus of x plus pi by 4, and in between minus 2 pi से 2 pi के बीच में आपको बताना है कि पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. ठीक है. So try to solve these 3 questions. We will continue our problem solving session in our upcoming videos. With this, I am ending up this session.